Good morning, students. How are you all doing? I hope you all are good and healthy safe at your homes. Well, students, let's begin today's session. Now, before I start, let's do a quick recap of what we did in the last week. In the last week, I sent you a revision assignment which you were supposed to be doing in your copies, and I actually hope that you have done that. Okay, it was with the first 3 chapters that we have covered so far. Okay, now in today's session, as you can see, we are going to start with your section B, and the name of the chapter is the Stolen Bacillus. Okay, so this is pronounced as Bacillus. Now, what is a bacillus? It is actually a rod-shaped bacteria. It's a kind of a bacteria. It looks like a rod shape. I hope you might have seen it in your science books, I believe. Okay, and today's session also, students, contains 2 videos. So in video 1, I'm going to be explaining, they're going to be looking at this story, this chapter explanation, and the video 2 is going to be based on your writing section. We are going to pick up a topic of your writing section, that is notice writing. Okay, now students, let me quickly give you the, I would say, the summary of this chapter. It's very interesting actually, and it is based on the situation that we are into right now. Since you all know we are going through the situation of pandemic, so this chapter is quite similar to the situation that is going on. Why? Because in this chapter also there is a bacteriologist. As you can see, the word is written over here. So this is bacteriologist. Okay, so bacteriologist. So this bacteriologist is, yes, of course, it's one stream of scientists who just do a research of bacteria. Okay, so he one day gets a visitor in his laboratory with a recommendation letter from someone, and he says that yes, I have been referred so that I can go and get to know about your recent invention, discovery. Okay, but actually the intention of that visitor is something dangerous. Okay, and he wanted to spread the virus in the entire country, in the entire nation, in the surrounding. Okay, so this is similar to something that has happened with the world right now also. Yes, as you all know that COVID-19 is going on, so it is something of a similar situation. It's a virus which has actually spread, and it is spreading all over the world. So this chapter is somewhat related to it, and I'm sure you find this chapter interesting. Okay, so let's begin the chapter. So I would like you all to open up your books, as you can see over here, and turn over to page 48, and this is section B. So let's begin. So see, the chapter starting itself, the introduction is written as it goes. Yes, so it's written as, have you heard about a biological war? Can bacteria be a weapon of war? Discuss in the class. So yes, so this is what you can discuss as you are not coming to school at the moment, but yes, you can discuss it with your friends, your family members. This is the situation that we are into. It's a kind of a biological weapon, what is being said. Okay, so yes, this again, said bacteriologist, slipping a glass side under microscope, is a preparation of a celebrated bacillus of cholera. So bacillus, as I mentioned, it is a rod-shaped bacteria. Cholera is a kind of a disease. The cholera germ. The pale-faced man peered down the microscope. He was evidently not used to that kind of a thing, and held a limb-wide hand over his free eye. I see very little, he said. So चैप्टर की स्टार्टिंग स्टूडेंट कैसे होती है कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, वो क्या कर रहा है, वो एक ग्लास स्लाइड में, यू डन एक्सपेरिमेंट्स आई एम श्योर इन द लैब, सो एक ग्लास स्लाइड पे वो बैक्टीरिया को डालता है और माइक्रोस्कोप के अंदर डाल देता है उसको, एंड उसको एक्सप्लेन कर रहा है वो
pale faced man. So this is the pale faced man is the character जो इस बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पास आता है. ओके, सो वो उसको दिखाने के लिए उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालता है. एंड वो जो पेल फेस्ड मैन है, अब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना नहीं आता है. यू नो, it's not easy to operate the microscope, student. Okay, so you have to do it under the guidance of your teachers or yes of course of experts. So similarly उसको समझ नहीं आ रही है वो, but then वो ये कह रहा है yes मुझे बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया का. So the bacteriologist tells him, touch the screw, said the bacteriologist. Perhaps the microscope is out of focus for you. Eyes vary so much. Just the fraction of a turn this way or that. So बैक्टीरियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप ऐसे करो कि आप इसको स्क्रू को घुमाओ एंड हो सकता है मेरे आई फोकस में और आपके आई के फोकस में फ़र्क है. सो येस, जस्ट टर्न इट एंड यू विल बी एबल टू सी इट. So he says, now I see, said the visitor. Not so very much to see after all. Little streaks. Streaks क्या होती हैं? They're long, narrow mark of color. Okay, so उसको थोड़ा सा कलर दिख रहा है उसमें. And shreds of pink. Shreds का मतलब यहाँ पे bits, shades of pink. And yet those little particles, those mere atomies are tiny particles, might multiply and devastate a city. Wonderful. So ये अब यहाँ पे देखो विजिटर क्या कह रहा है. विजिटर कह रहा है कि अच्छा हाँ अब मुझे दिख रहा है, इट्स काइंड ऑफ पिंक कलर. एंड ही सेज कि येस ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो ये एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है. तो देखो हमें यहीं पे पता चल रहा है कि वो जो विजिटर है उसकी सोच, उसकी इंटेंशन सही नहीं है. ही स्टूड अप एंड रिलीजिंग द ग्लास स्लाइड slipped from the microscope, held it in his hand towards the window. Scarcely visible, he said, looking carefully at the preparation. He hesitated. Are these alive? Are they dangerous now? So वो stranger, वो जो visitor है वो उठाता है ग्लास लाइट को और वो विंडो की तरफ लाइट में देखने की कोशिश कर रहा है. और वो फिर बैक्टीरियोलॉजिस्ट से पूछ रहा है क्या ये जिंदा है, मतलब क्या ये डेंजरस है. So see what response he gives. Those have been stained and killed, said the bacteriologist. I wish for my own part we could kill and stain every one of them in the universe. So see bacteriologist की क्या सोच है, क्या intention है. He is very good. He says कि yes I wish मैं इनको, ये वैसे ज़िंदा नहीं है, they have been killed and I hope कि मैं सारे बैक्टीरिया जितने भी दुनिया में हैं उनको भी किल कर सकूँ. I suppose, the pale man said with a slight smile, you scarcely care to have such things about you in the living, in active state. So pale faced man कह रहा है कि yes I doubt, मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं. On the contrary, we are obliged to, said the bacteriologist. Here for instance, he walked across the room and took one of several sealed tubes. Here is the living thing. This is a cultivation of actual living disease bacteria. He hesitated. Bottled cholera, so to speak. So अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है कि yes ये तो सब dead हैं and I want all the bacteria should be dead in the world ताकि कोई भी danger ना हो human beings को. But वो कह रहा है on the contrary, वो कहता है on the opposite side, yes ये देखो ये टेस्ट ट्यूब है and इस टेस्ट ट्यूब में alive बैक्टीरिया है, ठीक है, of cholera. So now let's go to the next page, students, page 49. A slight gleam of satisfaction appeared momentarily in the face of the pale man. The bacteriologist held the tube in his hand thoughtfully. Yes, here is the offending bacterium imprisoned. Only break such little tube as this into supply of drinking water, say to these minute particles of life, go forth, increase and multiply, and dead, mysterious, untraceable death. Untraceable means जिसे हम find नहीं कर सकते. Death swift and terrible, death full of pain and shame would be released upon the city. So bacteriologist इसको समझाने की कोशिश कर रहा है. देखो ये जो है ये alive बैक्टीरिया है और बस अगर ये हल्का सा इस टेस्ट ट्यूब में क्रैक डाला जाए और उसको पानी में छोड़ा जाए, so it can actually create a
It can create a lot of damage to the environment, to the city also. Terrible death होगी, pain होगी. The pale-faced man nodded. His eyes shone. He cleared his throat. These anarchists. Now, anarchist कौन है students? This is one of the important term in the chapter. Anarchist basically वो लोग होते हैं जो rules, law को follow नहीं करते. They go against the laws. In fact, ये सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है. Anarchist rascals, said he, are fools, blind fools to use bombs when this kind of thing is available, I think. So see, pale face man क्या कह रहा है कि yes, मुझे लगता है कि जो अनार्किस्ट हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो पागल हैं, बिकॉज वो बॉम्ब यूज़ करते हैं. अगर बॉम्ब की जगह इसे यूज़ किया जाए तो ये वही उतनी ही तबाही कर देगा. A gentle rap, a mere light touch of fingernail was heard at the door. The bacteriologist opened it. Just a minute, dear, whispered his wife. So दरवाजे पे नॉक हुई and the bacteriologist said, yes, just a minute. So it was his wife. When he re-entered the laboratory, his visitor was looking at his watch. I had no idea I had wasted an hour of your time, he said. 12 minutes to 4. 12 minutes to 4 means 4 बजने में 12 minutes बाकी हैं. I ought to have left here by 3:30. वो कहता है कि oh I'm sorry, मैंने आपका बहुत टाइम लगा दिया, मुझे तो 3:30 बजे यहाँ से चले जाना चाहिए था. But your things were really too interesting. No, positively, I cannot stop moment longer. I have an engagement at 4. सो वो पेल फेस मैन कह रहा है कि ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, अब मुझे भी कहीं जाना है, मुझे भी किसी से मिलना है, मीटिंग है. सो आई एम एट 4 o'clock, सो आई विल लीव राइट नाउ. ही पास्ड आउट द रूम रिपीटिंग हिज थैंक्स एंड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट accompanied him to the door and then returned thoughtfully along the passage to his laboratory. How he glotted का मतलब है बहुत उसको मज़ा आया, प्लेजर, on those cultivations of disease germs. A disturbing thought struck him. He turned to the bench by the vapor bath and then very quickly to his writing table. Then he felt hastily in his pockets and then rushed to the door. I may have put it down on the hall table, he said. So now जब वो अपने विजिटर को दरवाजे पे छोड़ के आ गया वापस, अचानक से उसको ध्यान आया that he has lost something. So he is trying to search it. Pockets में देखा, उसने टेबल पे देखा, फिर उसको लगा कि शायद नीचे like hallway में उसने छोड़ दिया होगा उसको. So he is calling his wife. Minnie, he shouted hoarsely in the hall. Yes, dear, came the distant voice. Had I anything in my hand when I spoke to you, dear, just now? Pause. Nothing, dear, because I remember. Blue ruin, cried bacteriologist. Blue ruin means yes, बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरा हुआ. And immediately ran to the front of the door and down the steps of his house to the street. So bacteriologist को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई. उसे लगा कि yes, he has misplaced the bacteria. And वो ऐसे ही भागा फटाफट अपनी street पे. Minnie, hearing the door slammed violently, ran in alarm to the window. Down the street, a slender man was getting into the cab. The bacteriologist, hatless and in his carpet slippers, was running and gesticulating. Gesticulating का मतलब होता है making gestures, मतलब मुंह बना रहा था, wildly toward this group. One slipper came off, but he did not wait for it. He has gone mad, said Minnie. It's that horrid का मतलब है unpleasant situation, horrid signs of his. The slender man pointed hastily to the bacteriologist, said something to the cabman. The apron of the cab slammed, the whip swished, the horse feet clattered, and in a moment the cab, with the bacteriologist hotly in pursuit. Hotly in pursuit means bacteriologist उसके पीछे पीछे भाग रहा था. Had receded means वो चलना शुरू हो गया. Up the vista means the beautiful view of the roadway and disappeared round the corner. So यहाँ पे क्या होता है, मिनी ने देखा अचानक से क्यों दरवाज़ा बैंग करके बैक्टीरियोलॉजिस्ट चला गया घर से. तब उसको समझ आता है कि यस,
जो कैब में इंसान बैठा था, पेल फेस्ड मैन, उसने उसका जो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, वो चुरा लिया है एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहा है। बट जब तक वो स्ट्रीट पे पहुंचा तो तब तक जो उसकी कैब है, नाउ हियर इन दोज डेज वी कैन सी द कैब इज़ ऑफ अ हॉर्स, ठीक है, इट्स अ हॉर्स कार्ट, ठीक है, घोड़ा गाड़ी है। तो वो चल पड़ी एंड जो पेल फेस्ड मैन है वो कैब मैन को कुछ कह रहा है और फटाफट से वो कैब चल पड़ी एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट बहुत तेज़ी से उसके पीछे भाग रहे हैं एंड कैब फटाफट से गायब हो गई। मिनी हेस्टली पुट हर बोनेट ऑन, तो उसने क्या किया, उसने, बोनेट इज स्टूडेंट्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द कार, ठीक है, उसने फटाफट से बोनेट अपनी कार का नीचे किया। सीज्ड हिज शूज़, मतलब उसके शूज़ लेके आ गई बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसके हस्बैंड के। वेंट इनटू द हॉल, took his hat and light overcoat from the peg. From the peg means, peg is actually the stand if you see in movies students. Peg is actually kind of a stand, ये दरवाजे के पीछे जो hooks होती हैं, ठीक है, those are called pegs, जहाँ पे हम अपने कपड़े टांगते हैं। Emerged upon the doorstep and hailed a cab, and let's go to the next page now. Yes students, so we are on the page 50 and I hope you all are with me and you're enjoying the chapter. So let's see क्या होता है। Crawl by, drive me up the road and round Havelock Crescent and see if we can find a gentleman running about in his velveteen coat and no hat. So मिनी उसकी वाइफ ने फिर दोबारा से कैब बुलाई और वो कैब को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि चलो उस हैवलॉक क्रेसेंट पे चलो एंड देखो कि अगर आपको जेंटलमैन दिख रहा है जिसने टोपी नहीं पहनी हुई, उसने एक वेलवेटीन कोट पहना हुआ है। The man in the foremost cab sat crouched in the corner. Now crouched का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वो पेल फेस्ड मैन था वो छुपने की कोशिश कर रहा है कैब में। तो वो क्राउच का मीनिंग होता है जैसे यू नो लाइक अगर आप गेम खेलते हो हाइड एंड सीक तो आप नीचे नहीं बैठ जाते हो छुपने के लिए, अपनी बॉडी को बिल्कुल छोटी सी बना लेते हो, यू बेंड योर लेग्स एंड यू गेट टू द ग्राउंड, उसे हम कहते हैं क्राउच्ड पोजीशन में होना। सो सिमिलरली वो पेल फेस्ड मैन क्राउच्ड पोजीशन में बैठ गया, his arms tightly folded and the little tube that contained such vast possibilities of destruction gripped in his hand. He had only to make sure of water supply and break the little tube into the reservoir. How brilliantly he had planned it, forged the letter of introduction and got into the laboratory, and how brilliantly he had seized this opportunity. He craned का मतलब होता है stretched out the cap, so उसके बाद फिर वो stretch out हो जाता है। The bacteriologist was scarcely 50 yards behind. That was bad. He would be caught and stopped yet. So देखो उसका प्लान क्या था, उसने एक लेटर भी जो थी, लेटर भी फेक लेटर बनाई थी इंट्रोडक्शन के लिए ताकि वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट के लैब में चला जाए और वो चीज़ को चुरा ले। वो करना क्या चाहता था, व्हाट वाज हिज इंटेंशन, वो उसकी इंटेंशन ये थी कि वो कहीं भी वाटर सप्लाई देखे, वाटर सप्लाई इन द सेंस कि कहीं पे रिजर्वायर और रिवर, और वहाँ पे जाके उसको टेस्ट ट्यूब को तोड़ दे ताकि डिस्ट्रक्शन फैल जाए। द कैब स्वेड द एनार्किस्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स वी केम अक्रॉस दिस टर्म एनार्किस्ट इन द प्रीवियस पेज, है ना, और मैंने आपको ये बताया था कि एनार्किस्ट वो लोग होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। सो यहाँ पे एनार्किस्ट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर दैट पेल फेस्ड मैन, तो वो एक्चुअली एनार्किस्ट ही हुआ, इजंट इट। हाफ स्टैंडिंग अंडर द ट्रैप, पुट द हैंड containing the little glass tube upon the apron to preserve his balance. He felt the brittle thick crack. Brittle यहाँ पे brittle का meaning होता है something which is hard but can easily break. Okay, crack. It's just like your I can say the phone cover shields. ठीक है, जो आपके फ़ोन स्क्रीन कवर्स होते हैं they are made of glass. वो hard होती हैं but एक बार crack होना शुरू हो जाए then it's spoiled, isn't it? So something of that sort we can say. So cracked and broken half of it rang up the floor of the cab. He fell back on the seat with a curse and stared dismally, means udasi mein, gloomingly, at the 2 or 3 drops of moisture on the apron.
तो अब वो क्या कर रहा था, वो छुपने की कोशिश कर रहा था, वो केयरफुल भी था, बट अचानक से क्या हुआ कि वो टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा क्रैक आ गया और उस बैक्टीरिया की 2-3 ड्रॉप्स उसके कोट पे गिर गए, उसके एप्रन पे गिर गए। अब वो बेचारा बहुत परेशान हो गया एंड वो सोच रहा है कि वो क्या करे। ही shuddered मतलब he became shocked. Well, I suppose I shall be the first. So यहाँ पे वो ये कह रहा है कि यस, अब वो उदास हो गया क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया गिर गया और उसे लग रहा था कि यस अब शायद वो ही मर जाएगा। सो इसलिए ही कुड डाई और ही विल हैव टू फेस द पेन। ओके, सो दैट्स वाई ही इज़ सेइंग आई शैल बी द फर्स्ट, मीन्स कि सबसे पहले वो ही खुद सफ़र करेगा। वो बिकॉज उसकी इंटेंशंस, बिकॉज उसकी गलत इंटेंशंस थी, सो सबसे पहले उसी को ही सफ़र करना पड़ेगा। ओके, a little drop was still in the broken end of the tube, and he drank that to make sure. It was better to make sure. तो जो बाकी बचा हुआ था उसने क्या किया, उसने वो पी लिया। ओके, नाउ लेट्स सी कि आगे क्या होता है। Then it dawned upon him, फिर अचानक से उसको ख्याल आया, there was no further need to escape the bacteriologist. In Wellington Street, he told the cabman to stop and got out. He stood on the pavement with his arms folded upon his breast, awaiting the arrival of the bacteriologist. अब उसको रियलाइज़ हुआ कि भागने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया सारा कुछ, उसने पी लिया और उसके ऊपर गिर गया। तो वो वेलिंगटन स्ट्रीट पे नीचे उतर जाता है, स्ट्रीट पे खड़ा हो जाता है हैंड्स फोल्ड करके, एंड वो वेट करनी शुरू कर देता है बैक्टीरियोलॉजिस्ट। फिर वो ऊंची से चिल्लाता है, विवे अनार्की, लॉन्ग लिव एनार्की। एनार्की अगेन एनार्किस्ट, तो वो खुद कह रहा है कि यस अब एनार्की जो है वो हमेशा लॉन्ग लिव करेगी। यू आर टू लेट माई फ्रेंड, आई हैव ड्रंक इट, द कॉलरा इज़ ब्रॉड। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम द कैब beamed curiously at him through his spectacles. You have drunk it? An anarchist? I see now. He was about to say something more and then he checked himself. So yes, a bacteriologist को वो बता रहा है कि yes अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वो पी चुका हूँ। Okay, so now let's see what happens further. What is the outcome? A smile hung in the corner of his mouth. He opened the apron of his cab as if to descend, at which the anarchist waved him a dramatic farewell and strode off towards Waterloo Bridge, carefully jostling का मतलब होता है to push with force his infected body against many people as possible. So अब यहाँ पे वो जो anarchist है वो हंस रहा है बैक्टीरियोलॉजिस्ट को देख के, एंड उसने अपना एप्रन भी उसको दिखाया कि इस पे भी गिर चुका है, एंड उसको पुश करते हुए वो फिर दोबारा उसमें चला गया एंड ही स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, एंड यस, सो ही वेंट टूवर्ड्स वाटरलू ब्रिज। अब वो वाटरलू ब्रिज की तरफ भाग रहा है, एंड यस, ताकि वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सके। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड विद द विजन ऑफ हिम दैट ही स्केर्सली शोड द स्लाइटेस्ट सरप्राइज at the appearance of Minnie upon the pavement with his hat and shoes and overcoat. So वो इतना ज़्यादा परेशान था कि उसने नोटिस नहीं किया कि उसकी वाइफ वहाँ पे पहुँच चुकी थी। Very good of you to bring my things, he said, and remained lost in contemplation. Okay, contemplation means act of looking at something for a long time. Contemplation of the receding figure of the anarchist. सो वो बहुत गौर से उसको अनार्किस्ट को देखने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। यू हैड बेटर गेट इन, ही सेड, स्टिल स्टेयरिंग। पुट ऑन माई शूज़। सर्टनली डियर, सेड ही। यू सी द मैन केम टू माई हाउस टू सी मी, ही इज़ एन अनार्किस्ट। नो, डोंट फेंट। अब अपनी वाइफ को कह रहा है कि देखो वो जो इंसान आया था वो एक अनार्किस्ट है, मीन्स वो एक क्रिमिनल टाइप इंसान है। अब वो वाइफ को कह रहा है प्लीज़ फेंट मत होना, मेरी बात पहले सुन लो पूरी। एंड आई कैनॉट पॉसिबली टेल यू द रेस्ट। एंड आई वॉन्टेड टू एस्टॉनिश हिम, नॉट नोइंग ही वॉज एन अनार्किस्ट, एंड टुक अप द कल्टिवेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियम आई वॉज टेलिंग यू ऑफ that infest and I think cause the blue patches upon various monkeys, and like a fool I said it was Asiatic cholera.
and he ran away with it to poison the water of London. And he certainly might have made things look blue for this civilized city. And now he has swallowed it, of course. He has swallowed it. Of course, I cannot say what will happen, but you know, it turned that kitten blue, and 3 puppies in patches, and sparrows bright blue. But the bother is, I shall have all the trouble and expense of preparing some more. So towards end of the chapter, students, हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट कह रहा है कि यस एक्चुअली वो जो मेरे हाथ में मैंने इसको ट्यूब दिखा रहा था वो कॉलरा नहीं था, मुझे मिस्टेक हुई थी कि वो कॉलरा है, वो एक्चुअली कुछ और ही चीज़ थी, कोई और बैक्टीरिया था. एंड फिर भी ये बैक्टीरिया भी इस बैक्टीरिया का रिएक्शन क्या था कि यस इस बैक्टीरिया का रिएक्शन ये था कि बहुत सारे एनिमल्स जैसे पपीज़ एंड द किटन वो सारे ब्लू हो गए थे, कुछ के ब्लू पैचेस हो गए थे. एंड यस सो ये हुआ था. बट ही सेड कि यस उसको अनार्किस्ट को लगा कि ये वो डेंजरस बैक्टीरिया है, और देखो वो क्या करना चाहता था, वो लंदन के पानी में इसको गिराना चाहता था ताकि पूरा लंदन शहर तबाह कर सके. So finally it was saved. It was not so dangerous bacteria in the end. Okay, so this is what the chapter is all about, students. So I hope you enjoyed the chapter. The chapter is written by Herbert George Wells. Okay, so now you have the word meanings, students, and along with the word meanings I will just show you the notes that you're supposed to be copying down on your copies. Okay, so this is your notes which I'm sending. कुछ extra और difficult words हैं जो मैंने आपको explain किए हैं, so I've mentioned them also, and then you have the question answers as well. Okay, so these all notes I'm going to be sending you the picture. You have to copy them all in your copies. Okay, and there is an activity, student, which I like you to do is, अब activity जो है वो है list out the ethics that you follow at home. Now what is ethics? Ethics actually होते हैं your discipline that you follow at home. For example, for example I would say कि अगर आपके घर में कोई old age कोई आपके आंटी अंकल आते हैं, right, it is our moral ethic to serve them water, so that is called an ethic. Okay, so this way I would like you to think of the ethics that you follow at home. In case if you don't follow, then what are the ethics you are going to follow? ठीक है, उनकी आप लिस्ट बनाओगे. And then on your page 52 the back exercises are also there. So I have solved the back exercise, and you can copy it, and even you can solve it in your books. Okay, yes, so it's been done. So this is the activity which I have discussed with you. Okay, so all this has to be performed. Now take a quick break, students, and we'll join again with our video 2 with notice writing.